My lovely students, welcome to Mathological. This is the 13th session of our CAT DILR series. In this series, we are doing 100 DILR sets for CAT examination. Start karte hain session ko. And if you have not already subscribed to our channel, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon. You can also join Telegram or WhatsApp channel. Link you can check out in the description. And if you have any questions or queries, you can message me on Telegram at ADITYA. So, set for today. This is the set for today, followed by 6 questions in total. So pause the video, try to solve the set, then only watch the solution. So to understand the set first, an e-commerce company PapaZone utilizes an automated sorting zone consisting of two parallel conveyor belts, rows X and rows Y. Rows X and Y. Row X contains slots numbered 1 to 9 from left to right, while row Y contains slots numbered 10 to 18 from left to right. During a shift, a manager must place 14 inventory boxes across the 18 slots. The inventory consists of 4 distinct categories. 2 are furniture boxes, 3 electronics boxes, 4 heavy appliance boxes, and 5 are apparel boxes. So there are 2 furniture boxes, 3 are electronics boxes, 4 heavy appliance boxes. Let us say they are represented by H, and 5 are apparel boxes. Total 5 plus 4 plus 5. Total 14 boxes are there. And we have 18 places to place these 14 boxes. Like out of 18 slots, 14 slots will be filled by these boxes and other 4 slots will be empty. Okay. Boxes belonging to the same category must occupy consecutively numbered slots on any single row. There must be at least one and at most 2 empty slots between boxes of different categories. Same category boxes must be kept consecutively in the same row. And if there are 2 types of boxes on the same row, then there must be at least one empty slot between them, and at most 2 empty slots can be between them. And apparel boxes occupy higher numbered slots than electronics boxes on the same row. So electronics and apparel boxes are in the same row. And apparel boxes occupy higher numbered slots. यानी कि number of electronic slots will be lesser than apparel boxes का slots. Okay. Slot 1 and 9 are empty. अब देखो दो हमारी rows हैं, row X and row Y. So slots numbered 1 and 9 are both in row X. एक बार अपना structure बना लेते हैं. Basic structure for this. So row X and row Y. And in every row there are total 9 slots. In row X they are from 1 to 9. From left to right, and in row Y they are from 10 to 18. Additionally, it is given that slots 1 and 9 are empty, so no boxes kept in slot 1 and slot 9. Okay, and electronics boxes are kept in lower numbered slots in comparison to appliance boxes, and these both are on the same row. Same row में है. Electronics boxes are total 3 and appliance boxes are total 5. ठीक है, and we'll be keeping one box in one slot. Okay, so total boxes हो रहे हैं electronics और appliance मिला के. Total 8 boxes are there. So there are 8 boxes and there must be at least one slot between them. तो क्या row X में possible है? Can we fit appliance as well as electronics boxes in the same row in row X? क्या ये possible होगा? क्योंकि row X में already slot number 1 and slot number 9 को हमने already empty रखा हुआ है. So only 7 slots are possible. So appliance as well as electronics boxes are not possible in row X. So they must definitely be in row Y. ओके और क्योंकि टोटल भी 8 आ रहा है और टोटल हमारे पास स्लॉट्स 9 है, so there must be one empty slot right between them. Electronics boxes must be coming before appliance boxes as per the condition. So first 3, any 10, 11 and 12 will be containing electronics boxes. Then there will be a gap followed by next 5 slots for appliance boxes. So this much is clear. Additionally, box P and Q contain furniture and electronics respectively. So box Q contains electronics, यानी कि box Q will be somewhere between 10, 11 and 12. And box P contains furniture. Box P belongs to a furniture box. Box Q belongs to a electronics box, electronics category, and are placed at same position in different rows. यानी कि positioning उनका same है.
और पोजिशनिंग सेम होने का मतलब क्या हुआ, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्सेज आर ईदर इन स्लॉट 10 और 11 और 12, तीनों में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्सेज आएंगे। तो बॉक्स पी और क्यू का पोजिशनिंग सेम है, विच इंप्लाइज इफ बॉक्स क्यू इज इन स्लॉट नंबर 10, देन वी कैनॉट पोजिशन एट द सेम पोजिशन इन रो एक्स में। क्या पॉसिबल होगा, 10 और 1, बिकॉज 1 तो एम्प्टी है, लेकिन डेफिनेटली क्यू कैनॉट बी इन स्लॉट नंबर 10, बिकॉज फिर हम पी को प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो क्यू कैन बी ईदर इन स्लॉट 11 और इन स्लॉट 12, एंड इफ क्यू इज इन स्लॉट 11, in that case p will be in slot 2, and if q is in slot 12, then p will be in slot 3. And since p is a furniture, or two items are there in the furniture boxes, and clearly box 2 and 3, slot number 2 and 3 will be containing furniture. And इसके बाद में we have 4 heavy appliance boxes, so they must be in 5, 6, 7 and 8. Okay, 5, 6, 7 and 8 में we will be having heavy appliance boxes. ठीक है, अच्छा ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता था हमारा कि मे बी 2 भी हमारा एम्प्टी स्लॉट होता, बिकॉज वेरी पॉसिबल हो सकता था। ठीक है, बट अगर हम 2 को एम्प्टी स्लॉट रख देते हैं, अगर हम ऐसे सोचे कि 2 को एम्प्टी स्लॉट कर दें, बिकॉज तब भी हमारा 3 एंड 12 पे फिक्स हो सकता है, 3 पे पी और 12 पे क्यू। बट इफ 2 इज द एम्प्टी स्लॉट, इन दैट केस देयर आर 2 फर्नीचर बॉक्सेस, यानी कि 3 एंड 4 विली फर्नीचर बॉक्सेस, फिर एक एम्प्टी स्लॉट आएगा। बट उसके बाद में हम 4 हैवी अप्लायंस वाले बॉक्सेस को फिलअप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर वी नीड 4 स्लॉट्स, बट 3 स्लॉट्स ही बचेंगे, सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। यानी क्लियरली 2 कैन नॉट बी empty. Okay, so 2 cannot be empty. So 2 and 3 will be furniture boxes, then 4 will be empty, and then 5, 6, 7, 8 will be containing heavy appliance boxes. तो यहाँ तक तो बातें फिक्स हो गई। ठीक है, P can be in either 2 or 3, and accordingly Q will be either in 11 or 12. आगे बढ़ते हैं। So box R containing apparel is preceded by an empty slot. So box R is an apparel box, and it is preceded by an empty slot. And clearly box R must be in slot number 14 and succeeded by box S. So box S is just right after. So empty slot, then R, then S. Or S will obviously be our parallel box in that case. Because consecutive boxes हमारे सारे के सारे क्या हैं, सेम कैटेगरी से बिलोंग करेंगे वैसे भी। नेक्स्ट, बॉक्स टी कंटेनिंग हैवी अप्लायंसेस इज एडजेसेंट टू एन एम्प्टी स्लॉट। तो बॉक्स टी इज एडजेसेंट टू एन एम्प्टी स्लॉट, बट क्योंकि हमारा बॉक्स नंबर स्लॉट नंबर 4 इज ऑल्सो एम्प्टी, स्लॉट नंबर 9 इज ऑल्सो एम्प्टी, तो बॉक्स टी कैन बी either in slot number 5 or it could be slot number 8. So both positions are possible. Boxes K, L and M belong to the same category. तो ये नहीं गिवन हमें कि K, L, M कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बट दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी K, L and M. तो ईदर दे विल बी बिलोंगिंग टू कैटेगरी हैवी अप्लायंसेस, बिकॉज हैवी अप्लायंसेस में ऑलरेडी हमें पता है कि बॉक्स नंबर T इज हैवी अप्लायंस बॉक्स, बट स्टिल 3 स्लॉट्स आर रिमेनिंग। तो टोटल 4 बॉक्सेस हमारे हैवी अप्लायंस में, या तो फिर K, L, M होगा हैवी अप्लायंस वाला। Either all these 3 boxes K, L and M belong to heavy appliance category, or they belong to appliances category, apparels category, sorry, apparel category, because apparel category में भी हमारे पास 3 slots remaining है, 16, 17, 18, और 3 slots are remaining in heavy appliance category. So either K, L and M, all of them belong to heavy appliances category, or they all belong to apparel category. इतना हमें information मिल जाता है with this given information. Now let us proceed to the questions. So first question, what is the sum of slot numbers on rows X and Y which are empty? Empty slots का sum क्या होगा? That is the question. So empty slots क्या कह रहे हैं? 1, 4 and 9 and 13. So sum will be 1 plus 4 plus 9 plus 13. So 13 plus 9, 22 plus 5, 27 should be the answer. Next question, how many slots on row X also have another box on row Y on the same relative position in the row? Okay, so row X पे अगर एक slot पे हमारा there is a box, so on the same corresponding position row Y should also contain a box. How many such slots are there? So row X slot 1 is empty and we have a box in row Y slot 1, that is slot number 10 effectively. ठीक है, बट वहां पे तो slot 1 वाला केस तो नहीं बनेगा, पर slot 2 वाले केस में row X slot 2 and row Y slot 11, both of these contain a box. Similarly, for slot 3 in row X, we have a corresponding slot in row Y which is containing a box. Similarly, for slot 5, so slot 2, slot 3, slot 5, slot 6, slot 7 and slot 8. Total 6 such slots are there which are also containing a box on row Y on the same relative position in the row. So 6 will be the answer for question number 2. Third question, what is the maximum possible difference between slot numbers occupied by P and R? Maximum possible difference between slot numbers occupied by box P and box R. तो box R का position तो fix है हमारा. Box R is in slot number 14
but box P का position can be slot number 2 or slot number 3. So maximum possible difference can be between 2 and 14, which is equal to 12. Straightforward question. Okay. Next question. How many distinct arrangements of boxes K, L and M are possible on the rows X and Y? कितने डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं फॉर बॉक्सेस के एल एंड एम? बाकी बॉक्सेस के लिए नहीं कह रहा है, बाकी बॉक्सेस को कैसे भी अरेंज करो, बट के एल एंड एम को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो वी आर नॉट श्योर कि वेदर बॉक्सेस के एल एंड एम बिलोंग टू हैवी अप्लायंसेस और दे बिलोंग टू अपैरल कैटेगरी. तो यही दो केस बनेंगे. अगर फर्स्ट केस है कि दे बिलोंग टू हैवी अप्लायंसेस कैटेगरी, इन दैट केस वी आर नॉट श्योर ऑफ द पोजिशन ऑफ बॉक्स टी और अकॉर्डिंगली अरेंज हो गए. ठीक है. सो इफ बॉक्स टी इज इन पोजिशन 5 in slot 5, if we have box T in slot 5, then in that case 6, 7 and 8 will be containing K, L and M in any arrangement. तो number of ways of arrangement क्या आ जाएगा? टोटल 3 factorial या फिर 6 arrangements आ जाएंगे for K, L and M. If box T is in slot number 5, in that case we can arrange K, L and M in 6 ways if they belong to heavy appliances category. Similarly, if box T is in slot number 8, then we can arrange K, L and M in slots 5, 6 and 7 in again 6 ways, 3 factorial ways. Third scenario, if K and M belong to appliance category, apparel category. If they belong to apparel category, तो apparel category में we already have R and S in slots 14 and 15 respectively. तो 16, 17, 18 ही empty बचा है. So in slot number 16, 17 and 18, we can arrange K and M in any way we like. The number of ways of arrangement will be 3 factorial again, which is equal to 6. So total ways will be 6 plus 6 plus 6, which is equal to 18. The answer for question number 4 will be equal to 18 are total arrangements for boxes K, L and M on rows X and Y. ओके. अगर एडिशनली साथ में के एल एम के साथ में पी क्यू का भी पूछता है तब फिर हमें फर्दर देखना पड़ता है फॉर पी एंड क्यू एज वेल, बिकॉज के एल एम का मामला इंडिपेंडेंट है और पी और क्यू के लिए भी दो सिनेरियोस पॉसिबल है. इधर देयर विल बी बॉक्स पी इन स्लॉट नंबर 2 एंड करस्पॉन्डिंगली बॉक्स क्यू इन स्लॉट नंबर 11 और बॉक्स पी इन स्लॉट नंबर 3 एंड बॉक्स क्यू इन स्लॉट नंबर 12. तो 2 सिनेरियोस आर पॉसिबल फॉर पी एंड क्यू. तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है इन दैट सिनेरियो. अगर हमें साथ में पी क्यू के बारे में भी पूछता बट वो नहीं पूछा है, तो फॉर के एल एंड एम ओनली the number of arrangements will be equal to 18. Now fifth question, if box L is opposite box T on the other row, then how many distinct arrangements of boxes K, L and M, P and Q are possible? अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है कि बॉक्स L is opposite box T on the other row. बॉक्स T के लिए दो पोजिशन पॉसिबल है, either it is in slot number 5 or it is in slot number 8, but box L is opposite box number T. So that is only possible if box T is definitely in slot number 8, because अगर box T slot number 5 में है तो उसके अपोजिट रो y में हमें मिल रहा है R. L के लिए पॉसिबिलिटी ही नहीं है, यानी क्लियरली box T must be in slot number 8 as per the given condition, and accordingly box L will be in slot number 17 and then 14, 15 पे ऑलरेडी R और S है, तो 16 एंड 18 आर एम्प्टी. एम्प्टी तो नहीं बट इनमें हम अल्टीमेटली फिलअप करेंगे के एंड एम को. ठीक है. तो के एंड एम कैन बी फिल्ड इफ के इज फिल्ड इन स्लॉट नंबर 16, देन एम विल बी इन स्लॉट नंबर 18 और वाइस वर्सा, एम इन स्लॉट नंबर 16 एंड के इन स्लॉट नंबर 18. तो देयर आर टू अरेंजमेंट्स पॉसिबल, बट साथ में पीक्यू को भी अरेंज करना है, तो अगेन उनके लिए भी दो केसेस पॉसिबल होंगे. तो टू केसेस आर पॉसिबल फॉर के एल एंड एम, क्योंकि एल की पोजीशन तो फिक्स है 17 पे. सिमिलरली फॉर पी एंड क्यू, सो इफ पी इज इन स्लॉट नंबर 2, देन क्यू विल बी इन स्लॉट नंबर 11, or if P is in slot number 3, then Q will be in slot number 12. So 2 scenarios are possible for P and Q. So 2 into 2 total arrangements will be equal to 4. In 4 ways we can arrange K, L and M, P and Q. Because यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल पर्टिकुलरली फिक्स हो जाती हैं. अगर L हमारा ऑपोजिट बॉक्स T है तो डेफिनेटली K, L and M सारे के सारे क्या हैं? These are apparels. और L का पोजीशन फिक्स है 17 पे, तो K एंड M का वाइस वर्सा फिक्स होगा. अगर K 16 पे होगा तो M आ जाएगा 18 पे, अदरवाइज इफ K इज इन 18 then M will be in 16 और अकॉर्डिंगली P and Q का भी अरेंजमेंट होगा. टोटल 4 अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे इस केस में. क्या है तो बात समझ में आती है? ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. If boxes A, B and C belong to the same category and boxes Q and D belong to the same category, boxes D and F are in the same row and box E and K are in the same row, then how many distinct arrangements of all the boxes are possible? एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं, बिकॉज कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में जिसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को फर्दर अरेंज करना पड़ेगा.
1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 18. Box number 1, slot number 1 is empty, slot number 9 is empty, and then slot number 4 was empty. No? Slot number 4 is empty. 2 and 3. These are furniture boxes, furniture slots. Then heavy appliances for 5, 6, 7, and 8. And T can be either in slot number 5 or slot number 8. Similarly, P can be in either slot number 2 or slot number 3. Accordingly, Q can be in slot number 11 or slot number 2. And 10, 11, and 12. And then 13 was empty, followed by R and S. Okay. So 4 categories. There are total 2 furniture boxes, 4 heavy appliance boxes, 3 electronics boxes, and 5 apparel boxes. So already we know that P is a furniture box, T is a heavy appliance box, Q is a electronics box, and R and S are apparel boxes. Additionally given हमें A, B, C belong to the same category. So जैसे K, L, and M belong to the same category, but we are not sure K, L, and M can belong to heavy appliance box, heavy appliance category, or appliance or apparel category. Similarly, A, B, C also belong to the same category. So if K, L, and M belongs to the heavy appliance category, in that case ABC will belong to apparel category, or vice versa. If K, L, and M belong to apparel category, in that case ABC will belong to heavy appliance category. ठीक है, और फिर इसके बाद इन्फॉर्मेशन हमें क्या कहते हैं, Q and D belong to the same category. So Q is a electronics box, so definitely D will also be electronics box. D and F are in the same row. अब अगर D and F सेम रो में है, अब देखो केसेस क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे. या तो ऐसा होगा कि इन heavy appliance category we will be having K, L, and M. अब क्योंकि वहां पे टोटल 4 स्लॉट्स हैं, 4 बॉक्सेस हैं, वन ऑफ दोज बॉक्सेस इज T, तो रिमेनिंग 3 क्या होंगे, K, L, and M होंगे, या फिर ABC होंगे. तो यानी कि सारे के सारे 4 ऑप्शंस फिलअप हो जाएंगे. सिमिलरली फॉर our apparel category, we already have R and S which are apparel boxes. तो रिमेनिंग 3 बॉक्सेस बचे हैं. अब या तो रिमेनिंग 3 बॉक्सेस हमारे होंगे A, B, C, और दिस विल बी K, L, and M. तो डेफिनेटली अगर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि डी एंड एफ आर इन द सेम रो, डी इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स, यानी कि रो वाई में बिलोंग करता है. सो इफ डी इज बिलोंगिंग टू रो वाई, एफ इज ऑल्सो इन रो वाई, बट एफ कैन नॉट बी अपैरल बॉक्स, बिकॉज अपैरल में या तो एबीसी बॉक्सेस होंगे अपैरल बॉक्सेस, या फिर केएलएम बॉक्सेस होंगे अपैरल बॉक्सेस, यानी डेफिनेटली एफ विल ऑल्सो बी इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स फॉर श्योर. तो क्यू, डी एंड एफ आर इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्सेस, दैट इज फिक्स्ड. And E and K are in the same row. So if E and K are in the same row, while E is, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी हमने फिलअप कर दिए हैं सारे के सारे बॉक्सेस हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले. तो ई और के सेम रो में है, दैट इंप्लाइज कि ई मस्ट बी अ फुटवेयर बॉक्स. ई मस्ट बी अ फुटवेयर बॉक्स, एंड इफ ई इज द फुटवेयर बॉक्स, देन के इज डेफिनेटली अ हैवी अप्लायंस बॉक्स. But if K is heavy appliance box, then L and M will also be a heavy appliance box, and then A, B, C will be apparel boxes. क्या ये बात समझ पा रहे हो? बिकॉज ई के लिए और तो कुछ मेंशन नहीं है, बट हमें ये पता है कि ए बी सी के एल एन ये सारे के सारे फिक्स कर दे हैवी अप्लायंस बॉक्सेस को, अपैरल बॉक्सेस को. फुटवेयर बॉक्सेस में ही एक स्लॉट हमारे पास खाली बचा था, तो डेफिनेटली ई मस्ट बी अ फुटवेयर बॉक्स. ठीक है, सो पी एंड ई आर फुटवेयर बॉक्सेस, टी के एल एम आर हैवी अप्लायंस बॉक्सेस, क्यू डी एफ आर इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्सेस, एंड आर एस ए बी सी आर अपैरल बॉक्सेस. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द बॉक्सेस आर पॉसिबल. तो क्या क्या फिक्स है हमारे पास? वी हैव फिक्स्ड आर एंड एस, बाकी सब कुछ वेरिएबल है, बाकी कुछ भी फिक्स नहीं है. तो बाकी सब जगह पे हमें कंडीशन देखना पड़ेगा. पी एंड क्यू आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, तो वहां से हमें कुछ सिनेरियोज मिलेंगे, और फिर बाद में हमारा टी के लिए पोजीशंस हैं, 2 पोजीशंस पॉसिबल है, 5 एंड 8. बट अब हमें ये पता है कि के एंड आर विद टी, दे आर ऑल्सो हैवी अप्लायंस बॉक्सेस. तो फर्स्ट सिनेरियो बनेगा हमारा फॉर, अगर हम हैवी अप्लायंसेस के लिए देखें, कंसिडर करें, तो इन दैट केस ईदर टी विल बी इन बॉक्स नंबर 5, स्लॉट नंबर 5. इफ टी इज इन स्लॉट नंबर 5, देन फॉर 6, 7, 8 टोटल 6 केसेस आर पॉसिबल फॉर अरेंजिंग के एल एंड एम. और सेकंड सिनेरियो हो सकता है when T is in slot number 8. In that case, we can arrange K and M in 6 ways. So total 12 arrangements are possible for all the heavy appliances. Okay. Similarly for apparel boxes, apparel में for these 3 slots, we have A, B and C. और उन पे कोई additional condition तो है नहीं, so they can be arranged in 6 ways. These can be arranged in 6 ways. अब बात करते हैं for footwear and
इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज वहां पे पी और क्यू का आपस में कंडीशन है, तो या तो पी एंड क्यू will be in slot number 2 and slot number 11. So if we are having P in slot number 2 and Q in slot number 11, in that case we have slot number 3 remaining in footwear, which will be containing obviously E, because एक ही box possible है और definitely तो 3 पे E is fixed, and in 10 and 30, 10 and 12 either we can have boxes क्या क्या बचे हमारे Q के बाद में D and F, either we'll be having D in box number 10, slot number 10, and F in slot number 12, or vice versa, F in slot number 10 and D in slot number 12. So two ways are possible in this case, और सिमिलर टू वेज हमें मिलेंगे जबकि P is in slot number 3, तो E will be in slot number 2, and similarly for other cases, so 2 plus 2, 4 cases are possible for arranging footwear and electronics boxes, so 4 ways for them. टोटल वेज क्या हो जाएंगे, बिकॉज ये सारे के सारे मामले क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो फुटवेयर और अपैरल को, फुटवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे अरेंज करते हैं, ये आपस में इंडिपेंडेंट है अरेंजमेंट से जो कि हम अपैरल्स का करेंगे, और ये इंडिपेंडेंट है अरेंजमेंट से जो कि हम हैवी अप्लायंसेस का करेंगे. 4 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फॉर फुटवेयर एंड electronics, multiplied by, for apparels there are total 6 arrangements, multiplied by there are total 12 arrangements for heavy appliances boxes. Total arrangements आ जाएंगे 4 into 6 into 12, which is 72 into 4, 288 ways. In total, 288 ways are possible to arrange all the given boxes. क्या clear है? Answer will be 288. So this was our set for today. I believe कि जो भी बातें हमने इसकी मजा आएगा इस पर्टिकुलर सेट में, और दिस सेट वाज मॉडल्ड बेस्ड ऑन 2019 केसलेट जो ऑलरेडी मैंने कल या परसों डिस्कस किया था. सो आई बिलीव कि सारी की सारी बातें समझ में, फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कुछ भी डाउट रहता है, छोटा सा भी डाउट रहता है, तो कमेंट जरूर मेंशन करना, मैं फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में. तुम्हें सेशन कैसा लगा? एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग. ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक दिस सेशन एज वेल. टेक केयर.